माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, पिछले 8 दिन से सर हाउस नहीं चल पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस भी नहीं हो पा रही। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो महंगाई पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो, और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि वो अगर चर्चा शुरू हो तो उसमें कोऑपरेट करें और हाउस से। धन्यवाद। नहीं, प्लीज प्लीज, he has already spoken, please. Deputy Chairman, sir. Sir, we totally agree with the appeal made by the honourable member, sir. Even our concern, our worry also is same, that the House should run. Definitely we wasted quite number of days. And we hope that the government would come to and understand the sense of the House, which clearly states that a debate should be taken, sir, on, my request is, sir, on price rise GST, and Telangana is ravaged with floods, sir. Thank you. Now, kindly take up the issue, sir. The Weapons of Mass Destruction and Delivery System Provision of Unlawful Activities Amendment Bill 2022, कल कुछ माननीय सदस्य जो नहीं बोल पाए थे, मैं उनका नाम पुनः लेना चाहता हूं। हालांकि माननीय मंत्री जी को जवाब देना था लास्ट में। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल एब्सेंट। माननीय श्री विकास रंजन भट्टाचार्य। So this is a very important bill which really discusses about taking care of mass destruction and the biological weapon. The basic issue is mass destruction. So the mass destruction cannot really be confined to the biological weapons or other artilleries. Mass destruction relates to the huge price rise. Please, you are deviating from subject. You are deviating from subject. People are, yes, people are dying. Mr. Vikas Ranjan Bhattacharya, you know the rules and procedure. You have to speak on the subject, otherwise it will not go on the record. Is it not an issue of mass destruction? He has to speak on the subject, otherwise it will not go on the record. The subject is mass destruction. Please, the subject you is speak not on the subject. only weapon. You speak on the subject, Sir, only that will go on record, sir. Please. Sir, Please. kindly listen to me. Please. Kindly listen to me. You have given your name to speak on this subject, Yes, the the weapons of subject- mass destruction and their Yes, delivery that's what system the provision and subject unlawful is. activities amendment bill. My lord- If you are not speaking on the subject, Sir, you know the rules, it will not go on the record. If you find me that I am I'll beyond be the subject, then definitely pull me down. The issue is basically mass destruction. And what we mean by... Please yes, correct yourself. don't interrupt me, sir. Correct yourself. The issue is the weapons of mass destruction and the delivery system provision and unlawful activities amendment bill. This relates to amendment bill 20. Please, no. No, you sir, cannot please. throttle my voice in this way. Please. I have my own point of view. My point of view may not be accepted. But why don't you allow me to speak on my point of view? You have to speak on this. You have your point of view. No, you have to speak on the subject. Otherwise, I'll move to other speaker. Please, No, please. that is very unfortunate. That's very unfortunate. I'll be forced as per law. You have immense power. I do not want to do, but as per law, जो सदन का नियम है, विकास जी, माननीय विकास जी, मुझे फोर्स होकर अगर उस विषय पर आप नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा. Allow me to speak. Please. That will breach the rules much more seriously. श्री वाई डॉक्टर फौजिया खान, नो. श्री राकेश सिन्हा, मैंने कई बार आपको मौका दिया, आप उस विषय पर बोल नहीं रहे हैं. प्लीज, श्री राकेश सिन्हा. आज पूरी दुनिया जिस दलहीज पर खड़ी है और आधुनिकता के साथ जो जटिलताएं बढ़ी हैं, उसमें इस बिल का महत्व बढ़ जाता है. इस बिल का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह उन हथियारों के संबंध में है, आप बोले, आपकी बात जो मानव के लिए घातक होता है. इसका महत्व इसलिए भी है, यदि इस बिल पर हमने गंभीरता से चर्चा नहीं की
तो हर देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ उस देश से जुड़ी हुई सीमाओं के साथ जो संबंध है वो सभी प्रभावित होते हैं। उपसभापति महोदय, मुझे दुख है इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज पूरा देश देख रहा है लोकतंत्र के इस मंदिर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर, जिस पर यूनाइटेड नेशन का सीधा संबंध है, उस पर आज विपक्ष न सिर्फ बहस में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो मुझे लगता है, मैं विपक्ष की उस अंतरात्मा से अपील करना चाहता हूं कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा, आपकी सूचना की अगेन I'm coming again. The scope of debate, rule number 1110. Please read rule number 1110, scope of debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of the arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than the necessary for the purpose of his arguments, which shall be of a general character. You want to speak something else and then you speak, no. You speak on the subject. I have taken name of all of you. Please, no. Please go back to your seats. उपसभापति मैं महोदय, सुबह में कह चुका हूं कि माननीय चेयरमैन ने स्पष्ट किया था कि प्ले कार्ड लेकर के वेल में आना, हाउस को डिस्टर्ब करना, ये नियम के अनुकूल नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक। आप प्लीज डू नॉट डिक्टेट, डू नॉट वेल में खड़ा होकर प्लीज टिकाना कर, मुझे फोर्स होकर आपको पुनः माननीय मेंबर्स, honorable members, please do not come in the veil of the house and shout slogans. It is against the well-established parliamentary customs and conventions. I request you to please go back to your seats and allow the house to function. If you continue to disrupt the proceedings of the house, I will have to invoke Rule 256 and name you. Yes, sir. Please. Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. I have clarified it, Vikas Ranjan ji. I have clarified it. I am not discussing now. Speaking in the way and discussing, no. Please go back. Play card लेकर खड़ा होना, वेल में साउट करना, it is against the rules. Please go back. Please go back to your seats. No point of order in disorder. No point of order in disorder. Well established. No point of order. No point of order. Please, no point of order. राकेश सिन्हा, प्लीज। उपसभापति महोदय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अपेक्षा की गई थी कि पूरी दुनिया के देश अपनी सभ्यता और मर्यादा के पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देता हूं। प्लीज आप पहले गो बैक टू योर सीट्स एंड प्लीज सिट। प्लीज रूल नंबर The rule number is 258. Yes. I've been trying to bring your attention from the morning. You are not allowing me a point of order. This is a new rule, sir. 258. 258. Yes. In the morning also, I tried to bring this another rule to your attention. I've already clarified morning things. Please speak on the rule. 258. Yes. When I want to raise a point of order, you cannot lay any conditions on me. It is my right to raise a point of order. Please read the rule. It's also with me. You read the you rule. Also read the rule. Chair has got the power to accept or not. Chair has got the power to even say, yes, sir, please. I agree with you. Sir, I agree with you. I agree. The chair also has the power to say, I'm wearing a black suit. And I will say, yes, sir, I'm wearing a black suit. Because you are in the chair, I respect you. So I'm not arguing with you. You have the power to say, I'm wearing a black suit. Sir, look at this point of order. No, sir. On the record. Sir, here is the point of order. Please. You read with me. You read with me. Let us have a... Sir, the opposition can have a rational discussion with you. We hope we can. Right, sir. Now look at this point of order because, any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine himself to stating the point. And after that, the chairman shall decide. My limited point is, with this 258A, you have every right, sir, to pass judgment on my point of order, but I have a right as a member
to raise a point of order at any time. So please do not lay a condition down. Go back to your chair. Let me sir. now clarify. Yes, sir. Please take your seat. Please take your seat. No, sir. One Please second, take your seat. You have You put do your not- point of order. Yes, please. This is a very clear provision कि House disorder में point of order will not be accepted. This is also clear. Come Number to one. Rule 238. House disorder में Sir, होगा, मैं who नहीं कर says yes? सकता. Yes, sir. Please. Come to Rule 259 then. Yes. Please come to Rule 259. 1 minute. Come to Rule 259, sir. Right, Very right. respectfully. Let me read the rule, then you pass your judgment. Sir, Yes. let me read the rule. Yes. Chairman to preserve order. Chairman to preserve order in the House. Ji. Sir, it is your prerogative. You are sitting in the chair. You will preserve. It is not my business to preserve. Right, Sir, sir. 1 second. Right. The chairman, Right, no. The chairman shall preserve order. The chairman shall preserve order. Vagera, vagera. Please. No, don't disrupt. The Derek ji, you chairman have made shall your point. preserve order and have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. Right. Please. अब आप बैठ जाए, please, Mr. Derek, So please. my limited- No. Yes, sir. You have multiple. माननीय, please, no, please बैठ. माननीय सदस्यगण, माननीय डेरिक जी ने जो बड़े वरिष्ठ मेंबर हैं, इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि चेयर की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को व्यवस्थित रखें. माननीय सदस्यों से क्या जिम्मेदारी है, उनके टिकट्स और बिहेव क्या है. आई वुड लाइक टू रिपीट द रूल नंबर 238. rules of to be observed while speaking. A member while speaking shall not refer to any matter of fact which is judicial decision is pending, make a personal charge against a member, use offensive expressions about the conduct or proceedings of the House or any state legislature, reflect on any determinants of the council except a motion of this kind. मैं पढ़ना नहीं चाहता कि आपसे एटिकेट की क्या अपेक्षा की गई है. वेल में नहीं होंगे, स्लोगन शाउटिंग नहीं करेंगे. लगातार माननीय चेयरमैन कहते रहे, आज सुबह भी उन्होंने कहा प्ले कार्ड लेकर आप आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते. इसलिए बहुत क्लियर इस बारे में रूल्स हैं. नो, आई एम नॉट एंटरिंग इन डिबेट नाउ. नो, आई एम नॉट एंटरिंग इन डिबेट नाउ. नो डिबेट. I'll give him opportunity. I have made it clear. Subject. You cannot dictate the chair. मैं अगर आप सब्जेक्ट पर बोलेंगे पुनः दोबारा मौका दूंगा. विकास जी, अगर आप सब्जेक्ट पर बोलेंगे मौका दूंगा. प्लीज. उपसभापति महोदय, प्लीज. हम जिस मुकाम पर हैं संसदीय जनतंत्र के, उस मुकाम पर हाउस ऑफ एल्डर्स में अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में सामान्य जो विभाजन की रेखाएं होती हैं उससे ऊपर उठकर हम विमर्श करें और राष्ट्रीय सुरक्षा कृपया को वेल में मजबूत ना आए, करें। अदरवाइज आई हैव टू नेम. आई हैव रिक्वेस्टेड यू सेवरल टाइम्स. मैंने बार आप सबको निवेदन किया है, सुबह में कहा है कि अनप्रेजेंट टास्क चेयर को ना दें. प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू. आप प्ले कार्ड लेकर के वेल में आना, डिस्टर्ब करना, मैं बार कह रहा हूं. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. प्लीज गो बैक. प्ले कार्ड लेकर के आना. I have no option, माननीय members. Again, honorable members, please do not come in the well of the house and shout slogans. It is against the well-established parliamentary customs and conventions. I request you to please go back to your seats and allow the house to function. If you continue to disrupt the proceedings of the house, I will have to invoke Rule 256 and name you. I am repeating. I am telling you, please go back to your seats. Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. Since you are continuously disrupting the proceedings of the House and not listening to the orders of the chair, I am forced to name you. I am forced to name you. सुष्मिता देव जी, मौसम नूर जी, डोला सेन जी, शांता छेत्री जी, शांतनु सेन जी, रंजन विश्वास जी, नदीमुल हक जी,
आप लोग वेल से जाए, अपनी सीट पर जाए, पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज अपनी सीट पर जाए। आप नहीं जा रहे हैं। has not been named. Brian to be named. नाम दे दो। Please go back to your seats. Please वेल में ना आए, प्लीज। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। प्लीज, I've already named, प्लीज सीट पर गए। Mr. M.M. Abdullah, Mr. L. Yadav, Mr. Ram, please go back to your seats. Please. Rahim, say Rahim. Rajan, HB, M. Somu, S. Kalyan, Samukham, B. Lingaya Yadav, please go back to your seats. Please go back. Otherwise, I have no option. Move the motion. Move the motion. Sir, with your permission, I move the following motion that this House, having taken a serious note of the misconduct of Mohammad Nadimul Haq, Ms. Dola Sen, Srimati Shanta Chetri, Shri Abir Ranjan Vishwas, Dr. Shantanu Sen, Srimati Mausam Noor, Ms. Sushmita Dev, Shri Mohammad Abdullah, Kanimudi NVN Somu, A. Rahim, by showing utter disregard to the House and the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolved that the above mentioned members be suspended from the service of the Council for the remainder of the current week under Rule 256. The question is that the House had taken a serious note of the misconduct of the Sushmita Sen ji, Mausam Dev ji, Sushmita Dev ji, Mausam Noor ji, Shanta Chetri ji, Dola Sen ji, Shantanu Sen ji, A.R. ji, Nadimul Haq ji, M.M. Abdullah ji, L. Yadav ji, A. Rahim, Badiraju, Kalam ji, Girirajan. Please, who have entered the NR Elango,
V. Sivdasan, M. Sammukham, Damodar Santosh Kumar P, who have entered the veil of the House and have been continuously shouting slogans, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolves that the above mentioned members, that is, mentioned to be suspended from the services of the Council for the remainder of this week under the Rule 256. No amendment, adjournment or debate is allowed under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The ayes. Please go back to your seats. I am ready to give division. माननीय सदस्यगण, मैं डिवीजन देने को तैयार हूं। डिवीजन का जो नियम है कि सारे सदस्य अपनी सीट पर जाए तभी डिवीजन संभव। दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डिवीजन चाहते हो तो अपनी सीट पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिर्फ डिवीजन की मांग कर रहे हैं। प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स। इफ यू गो टू योर सीट्स, आई एम रेडी टू गिव डिवीजन। Going on record, no point of order during. आप लोग अगर वापस नहीं जाएंगे अपनी सीट पर तो मैं मोशन एडॉप्ट करूंगा। अगर आप सीरियस हैं वोटिंग के बारे में, अपनी सीट पर जाइए, मैं वोटिंग के लिए तैयार हूं। प्लीज, नो, इसका मतलब आप वोटिंग नहीं चाहते। प्लीज लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड। अगर आप वोटिंग चाहते हैं तो अपनी सीट से जाइए। हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, आप सब जानते हैं। हाउस अगर ऑर्डर में होगा तभी डिवीजन संभव है, अदरवाइज डिवीजन संभव नहीं है। वॉइस वोट से पास होगा। Yes, voice vote is also what? Please go for voting. The house has to be in order. Please, आप अगर नहीं जाते हैं, मैं अगेन आपको मौका दे रहा हूं, अपनी सीट पर जाइए, मैं वोटिंग कराऊंगा। अपनी सीट पर मौका दे रहा हूं। सीट पर नहीं जाएंगे, वोटिंग नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं। सीट पर जाइए, मैं वोटिंग के लिए मौका दे रहा हूं। सीट पर जाइए, मौका मैं देने को तैयार हूं। Is adopted. Motion is adopted. Above mentions are suspended for the remaining part of this week. जो माननीय सदस्य सस्पेंड हुए हैं उनको प्लीज वो हाउस सदन से बाहर जाए, हाउस को चलने दे। प्लीज हाउस एडजर्न फॉर 15 मिनट्स।